वेलकम टू द चैनल। आज लेक्चर में आम बफर सिस्टम उपर डिस्कस करवा जो थी कि आम इंट्रोडक्शन बफर्स कौन कौन टाइप्स रोचे तार केमिकल कंपोजिशंस एवं तार फंक्शंस उपर डिटेल रे स्टडी करवा। एथिरे एक्सप्लेनेशन सहित कंप्लीट नोट्स मध्य रहियो। तो चैनल को नुआ विजिट करथिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस करो जेमिति नेक्स्ट लेक्चर मिस न हो। देरी न कर स्टार्ट करवा। A buffer is a solution that resists the change in pH when small amount of acid or base are added to it. Buffer रो काम होची ताहा कोन करे ना स्मॉल अमाउंट एसिड और स्मॉल अमाउंट बेस ऐड कला परे मध्य ताहाकु से न्यूट्रलाइज करिया पई हेल्प करे। Body's buffers are essential to maintain the blood pH while the narrow normal range of 7.35 to 7.45 यह कौन करे ना बॉडी रो पीएच मेंटेन करिवारे मध्य हेल्प करे। ए बफर सिस्टम इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। बफर एक्ट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मेकिंग देम फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एग्नेस्ट द पीएच चेंजेस। यह मध्य बॉडी रो फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भाव में एक्ट करे केमिति ना जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे बॉडी रे कौनसी प्रकार पीएच चेंजेस हेले ताहा एक्ट करे फॉर न्यूट्रलाइज पाई। जस्ट लाइक बॉडी रे ब्लड रो पीएच टा नॉर्मल रेंज रु अधिका हेले किबा कमिले बॉडी रे जो बफर सिस्टम रोची ताहाकू न्यूट्रलाइज करिवारे हेल्प करे। नेक्स्ट आसीबा टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम इन आवर बॉडी। चारि प्रकार होची। प्रथम आछि बायोकेमिकल बफर सिस्टम दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बफर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा। यह प्लाज्मा एवं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करिवारे हेल्प करे। नेक्स्ट आछि फॉस्फेट बफर सिस्टम दैट इंपोर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर आल्सो एक्टिव इन रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड एंड यूरिन। सेमिति प्रोटीन बफर सिस्टम रोची द प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्ट एज बफर्स इन द बॉडी एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट आछि हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम that is a special protein buffer present inside the red blood cells. एमिति हमर चारि प्रकार बफर सिस्टम्स रोची। द बफर्स एक्ट टुगेदर बट द बाइकार्बोनेट सिस्टम इज द मोस्ट वाइटल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड पीएच एज इट इज लिंक्ड बोथ रेस्पिरेटरी एंड रेनल कंपेंशंस। मोस्टली बाइकार्बोनेट बफर ब्लड रो पीएच रेगुलेट पई मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। नेक्स्ट ये सब को वन बाय वन डिस्कस करवा। प्रथम आछि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। यार कंपोजिशंस रोची प्रथमे वीक एसिड रोची कार्बोनिक एसिड कंजुगेट बेस रोची जोटा कि बाइकार्बोनेट HCO3-। यार केमिकल इक्वेशन रोची CO2 प्लस H2O रिवर्सिबल H2CO3 सेमिति अगेन रिवर्सिबल H प्लस HCO3-। देन यार नॉर्मल रेशियो रोची HCO3 रोची 20% एवं H2CO3 रोची 1%। तो यार रेशियो रहिला 20:1। यार फंक्शंस रोची लंग्स रेगुलेट H2CO3 किडनी रेगुलेट HCO3- भाया एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। फॉस्फेट बफर सिस्टम यार कंपोजिशंस रोची वीक एसिड रोची जोटा कि मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सेपरी कंजुगेट बेस रोची डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एवं यार केमिकल इक्वेशन रोची H2PO4 रिवर्सिबल H प्लस HPO4 2-। सेमिति यार नॉर्मल रेंज रोची 4:1 जोटा कि 4% रोची HPO4 2- एंड 1% रोची H2PO4-। एरो इम्पोर्टेंस और फंक्शंस रोची माइनर रोल इन प्लाज्मा बट मेजर इन इंट्रासेलुलर बफर्स। इट्स वेरी इंपोर्टेंट इन रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड एंड यूरिन where it helps excrete excess hydrogen ion H titrable acid. नेक्स्ट आसीबा प्रोटीन बफर सिस्टम। सेमिति एहार कंपोजिशन रोची प्लाज्मा प्रोटीन जोटा कि मेनली एल्बुमिन दैट एक्ट एज बफर्स ड्यू टू देयर एमॉर्फेटिक नेचर। Amino acid are side chains that carries ionized
COOH and ionized NH2 groups that can donate or accept H plus ions. यार मेकानिज्म रोची COOH minus reversible COO plus H plus that act as acid and releases the hydrogen ion when pH rises. सेपरी NH2 रो फंक्शन रोची NH2 plus H plus reversible NH3 plus. It acts as base and accept the H plus when pH falls to low. यार क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रोची प्लाज्मा प्रोटीन्स contribute a small but steady buffering capacity in the blood. Because of large size and quantity, the proteins overflow from the major buffer system in the body, especially inside the cells. Next is the hemoglobin buffer system. The composition होची reduced hemoglobin that is HHB जहाँकि weak acid भाव में काम करे. Next oxyhemoglobin that is HbO2 that act as stronger acid than HHB. And यार mechanism रोची in tissue the oxyhemoglobin release the O2 and becomes reduced to hemoglobin which is a weaker acid and readily accept the H plus ion. In the lungs, the hemoglobin binds to oxygen again that becomes the stronger acid and releases the hydrogen ion which combines with the HCO3 minus to form the carbon dioxide for inhalation. Clinical importance rochi hemoglobin is the most powerful buffer inside the red blood cells and links oxygen and carbon dioxide transport directly with acid base balance. यह एसिड बेस बैलेंस द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करे. नेक्स्ट द फंक्शन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बफर. इट मेंटेन्स ब्लड एंड फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड within the narrow normal length that between 7.35 to 7.45 that essential for enzyme activity and cell functions. It provides the immediate and fast line of defense against sudden acid or sudden base loads that acting within seconds. Third function होची work together with respiratory renal compositions and mechanisms for the long term pH regulation. Seମିତି bicarbonate buffer is the clinically most important that used access the acid base disorders through the arterial blood gas analysis. The failure and exhaustion of the buffer system leads to serious clinical conditions such as metabolic and respiratory alkalosis and acidosis. ओके आज लेक्चर एटी एंड होची. लेक्चर एवं नोट्स वैल्यूएबल थिले लाइक एवं शेयर करो एवं सब्सक्राइब करे बेल आइकन टिके प्रेस करो जेमिति नेक्स्ट लेक्चर मिस न हो. थैंक्स फॉर वाचिंग.